Okay, so we'll start. So good evening. Today's topic is internal motivation. Actually, regular daily to daily life रे हम regular life रे हमें जहाँ भी करूँचे due to some motivation. हमें से office जाऊँचे कि निजो business करूँचे जहाँ भी हमें करूँचे due to some motivation. बिना motivation रे सकाळ 8 टा लोक उठियो जदि गोटे लोक सकाळ 5 सकाळ 5:30 टा 6 टा लोक उठुची ता माने he is motivated. Okay, due to some reason. Okay, maybe तार ऑफिस काम थाई पारे, ओके मे बी तार ऑफिस काम थाई पारे सेति से मोटिवेटेड बिकॉज़ मंथ एंड रे सैलरी मिलुच. मे बी तार काहा को मीट करिवार थाए इंपोर्टेंट कोई इंपोर्टेंट लोक को मीट करिवार थियो सेति से मोटिवेटेड. बट इफ someone is doing some extraordinary thing or abnormal thing, whatever, either extraordinary or abnormal, जोटा कि normal नुह यदि के गोटे लोक करूची ता माने से मोटिवेटेड, पॉजिटिवली मोटिवेटेड नेगेटिवली मोटिवेटेड मुझे से विषय कहूनी बट ही इज मोटिवेटेड. जदि गोटे लोक सकाळ 8 टा को उठिची माने नॉर्मल सेटा माने से जानिबो त निद भांगिला सोई 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 थकी गला लास्ट बेते उठिला. बट से जदि जल्दी उठुची किछि गोटे काम करियो जज माने ही इज मोटिवेटेड. मोटिवेशन लीड्स टू ईच एंड एवरी वर्क इन आवर लाइफ. जदि गोटे लोकर मोटिवेशन किछि न थाए रिलैक्स्ड मोड रे सब बेले रहे ता माने से 40 वर्ष बयस रे भी लफंगा के बुलथो से लाइफ रे केबे किछि करिवनी. बट हु इज एक्चुअली मोटिवेटेड, द पर्सन हु इज एक्चुअली मोटिवेटेड, ही विल डू समथिंग. लागिबो जे हम किछि गोटे करूछि ता वर्किंग रे फार्मनेस रहइबो सेति की फार्मली वर्क करिवो, से ता टॉकिंग रे सेति की फार्मनेस रहइबो, ता बिहेवियर सेति की कोन इंपोर्टेंस सेति की इंपोर्टेंस फिल ऑफ ता बिहेवियर रे. जदि केही लोक सचन मोटिवेटेड अछि मन जानि परिबो ता एटीट्यूड. देन कम टू मोटिवेशन. मु जेमति कहली कि ईच एंड एवरी वन ऑफ हु आर डूइंग समथिंग टू फर्दर लाइवलीहुड, जो माने भी रोजगार पई किछ ना किछ करूछंती समस्त मोटिवेटेड. ओके, यदि कम टका रोजगार पई किछ ना किछ करूछ मोटिवेटेड. हाईली बहुत धनी जदि निज इनकम रे हेइछ माने मोटिवेटेड. तो मोटिवेशन समस्त पाखे थाए जे किछ ना किछ करूछ निज परिवार चलाय पे मोटिवेटेड. बट एठी हला इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन. एक्सटर्नल फैक्टर्स मोटिवेट्स द 80% ऑफ पीपल. दुनिया रा 80% जो माने सब मु मनी टाकू गोटे क्राइटेरिया बोली नउची. ओके, टंकाटा मनी इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया टू डिफाइन समवन्स प्रोडक्टिविटी. गोटे लोक प्रोडक्टिव अछि ना नाही टंका इनकम टा केवल क्राइटेरिया नुह. बट गोटे इट इज नॉट एन ओनली क्राइटेरिया बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया. यदि गोटे लोक टंका इनकम करूची माने हम कहबे जे प्रोडक्टिव. मनी इनकमिंग having some income is not the only criteria, but having some income is one of the most important criteria to judge if that person is productive or not. Okay, जदि गोटे लोक टंका इनकम करूची माने हम जानि पारे से प्रोडक्टिव, बट इट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया. बिना टंका इनकम रे भी गोटे लोक प्रोडक्टिव हे पारे. तो मु से छोटो जिनछटा को नउची. जदि गोटे लोक डेली लाइफ रे किछ ना किछ गोटे करूची टंका इनकम पई, से ऑफिस जाउची, से बिजनेस करूची, जहां भी करूची मनी इनकम पई माने से मोटिवेटेड, मनी मोटिवेटेड. ओके, सो मोटिवेशन दी टाइप रो थाए. गोटेला एक्सटर्नल गोटेला इंटरनल. जेमति कहली कि 80% लोक दुनिया रे 80% ऑफ पीपल दे आर हाईली मोटिवेटेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स. ओके, जेमति गोटे भलो एग्जांपल मु नउची. जेमति गोटे लोक मनकर 20 वर्ष 22 वर्ष बयस रे से एते इंपोर्टेंस दोन निज लुक प्रति. हा जहा होछु चुटी फुटी बढ़िलाणी, सेविंग नाही, दाढ़ी फाड़ी रखी 30-32 वर्ष रही जाउची, बाहागर समय आसी जाउची, से चिकन जगन हवा स्टार्ट करूची ना फेस वाश करिया स्टार्ट करूची बिकॉज़ पेट बाहर थिले जाउची जॉगिंग करी किंतु पेट कमे दी ना बाहागर समय आसी गला. एबे मोटिवेशन कोन गोटे झियो कि गोटे पुओ व्हाटएवर. मु जनरली पुओ मन एग्जांपल नो, झियो मन एग्जांपल नै परिबिनी. तो मु पुओ गोटे पुओ मन जनरली मोटिवेशन सेटा ना मो हेलानी बयस बाहागर फागर हवा पेट बाहर गलानी पेट कमेबा जॉगिंग करी जिवा सेविंग करिवा. This is a kind of motivation. तमाने से किछि गोटे निज आडू किछ ना किछ गोटे करिया को इंटरेस्ट ना.
each and every day we are motivated. आम ऑफिस जाऊे मंथ एंड रे सैलरी मिल दैट इज द मोटिवेशन. आम जहाँ भी करूचे दे ऑल आर मोटिवेशन. मनकर ऑफिस टाइम रे लंच ब्रेक रे आम कथा हो जाउचे फैमिली संगे जहाँ हो मुझे परिवार संगे कथा है मत टाइम मिलूनी कथा मुझे ना तमाने मोटिवेटेड बाय रिलेशनशिप. ओके सो दिस energy, this motivation is controlling each and every human being who are productive. जो काम दाम किसी करूछन. So it is an energy. Motivation is an energy which comes to us in the form of love, fear, joy, anger, passion or despair. Clear? मनकर if you love somebody, for to find love back or to find that person or to find that thing or to find that emotion, you will do anything. that is a motivation. fear motivation. सकाळ 8:30 बेले न पहुंचले ऑफिस रे कि 10टा बेले न पहुंचले बॉस गाली करिवो. 10 मिनिट लेट हो मे भी हाफ डे ही जाय परिवो. यदि हाफ डे ही जो 10,000 टका कटि जिवो नै सैलरी आधा कटि जिवो. तो सेठी फियर मोटिवेशन. तेणु सकाल 5टा बेलू उठी 6:30 बेलू 6:30 बेलू घर बाहर अच्छे उठी कहीं उठेबेनी से ऑटोमेटिकली सुकुड़ा निजे उठी जातो. दैट इज फियर मोटिवेशन. जॉय. समटाइम्स यू फील टू डू समथिंग वर्क, to do some work. By doing that work you feel joy, you feel delightful inside you. मनकर से RRR फिल्म पड़ीगला, फिल्म देखी पळेलो भारी खुशी लागला, भारी जॉयफुल फिल्म टा भारी भल लागला. तापरे लोक मानक प्रमोशन करिया स्टार्ट कर देलो. आशा आउथरी जीवा केते लोक प्रमोशन करिया स्टार्ट कर. दैट मींस दैट इज ए मोटिवेशन ड्यू टू जॉय. ओके देन anger motivation, passion motivation, despair. यदि कोन despair को केमती एक्सप्रेस करिया. यदि माने बहुत मु गोटे काम करिया को तत्पर अछि, गोटे काम करिया माने मु despairingly I am dying for that to do that work. ओके जेमति मु कहली कि 30-32 वर्ष यदि गोटे लोक 40 वर्ष हो बाहागर फाइ करै परने से he is despair to marry. Okay, so anything that compels you to do some work, that is motivation. Anything. So it comes to us as ecstasy, concern, pride, jealousy, desire, grief, compassion or elation. These are our emotions. Those are our motivators or our demotivators. Okay, so generally motivators, demotivators बोली किस है negative motivation छोड़ा मैं कहता हूँ. These things will set us in motion. आमे कौन सी काम को तो मोशन रे तो पकाए. They are the fires which infuse our lives with action. These are the fires. These are the fuel. These are the fuel which compels us to do some work, which leads us to do some work. Okay, so जेमति मु कहल these are motivations, but unfortunately these things are not positive motivation. These are these things are not internal motivation. These are external motivation. Okay, these emotions, when they compel you to do something, when you are motivated from the outside world, you will not be driven by your dream. You will be not driven by your own inner one. तुम निज भीतर थे मनुष्य तुमको ड्राइव करिवनी, से बाहर मोटिवेशन तुमको ड्राइव करे. Okay, so these things, when something outside will compel you to do some work, then that is external motivation. And what is internal motivation? We will discuss something about internal motivation. But internal motivation, the reason behind the only reason behind external motivation is internal motivation. Sorry, internal motivation is external motivation. Means to the external motivation अच्छी माने you will be internally motivated. किसी ना किसी तो वो external motivation थे. माना करो let's say मते
गोटे छोट एग्जांपल नउछ मन कर मते 8 वर्ष गाड़ी किनिबार अछि जते बेले मु से गाड़ी को देखुची मो ड्रीम गाड़ी टा मन कर से जो वोल्क्सवैगन रो गोटे गाड़ी मोर ड्रीम कार मन कर वोल्क्सवैगन मन कर से गाड़ी टा को मु देखिली मते मोटिवेशन लागला ओके तो से गाड़ी प्रति से जो मोर चाहत मोर से जो वांटिंग टा मते डेली टू डेली लाइफ रे कंपेल करूची बिजनेस करिया पे क्लियर तेणु जदि मनकर मो पड़ोसी से गाटा किनदेला है तार से एक्सटर्नल मोटिवेशन मते मते मुझे रही पारिनी मु केमती ना केमती गोटे किनिबी जदि मो पड़ोसी गाड़ी देखिकी एवरीडे मु इंस्पायर दैट इज इंटरनल मोटिवेशन क्लियर तेणु इंटरनल मोटिवेशन कम्स फ्रॉम सम एक्सटर्नल मोटिवेशन but if that external motivation is not converted to internal motivation then it will not be fruitful clear मन करो मु कोनोसी जिंस गोटे बाहर देखली मते भल लागिला मु 5 मिनिट पे मोटिवेटेड हेली 10 मिनिट पे मोटिवेटेड हेली दैट इज एक्सटर्नल मोटिवेशन जदि सेटा मो भितरे जदि सेटा मो भितरे एनगल्फ न हे गला सेटा मो भितर को न पसी गला देन सेटा लास्ट करिवनी बहुत समय पर्यंत इट हैज टू बी इनसाइड मी it has to be for because कोनोसी जिंस को हमें हम सेंस थ्रो रे हम all the 5 senses हम जहां भी सेडा को सेंस करूचे देखुचे टच करूचे मैं सुनुचे से साउंड जहां भी हम सेंस करूचे जो जिंस गुडा को जदि हम सेडा मोटिवेट करूचे माने बहुत कम समय पर मोटिवेट करि परियो बट इंटरनल मोटिवेशन समथिंग जोड़ा सेडा सब दिन पे भीतर रहि जिवो we can dive for that thing okay I will come to that topic how external motivation converted to internal motivation but then some kind of external motivation I will discuss some kind of external motivation does not necessarily come from a supportive friend who encourages you to do your best many of our external motivation are not even human external motivation सब बेले तमरो कोन knowingly तुमको मिलियोनी गोटे तुमको सपोर्टिव फ्रेंड तुमको दबा एमती केबे हे परियोनी समटाइम्स दोस मोटिवेशंस आर नॉट इवन ह्यूमन ओके किछि अलगा जिंस किछि छोटगडा जिंस तुमको ता पे तुम काम कर जाउथो मन करो लेट्स से तुम डेली डेली ऑफिस जाउचो बाटरे गोटे भलो सीनरी अछि सेडा तुमको भल लागला तुम से डेली डेली ऑफिस जीवा बाटा को तुम चेंज करछो केवल से जिंसटा देखिया पे मन करो मुझे समय एडीसी जाए मते से जो कोन से जाडा बैजयंत पंडा घरटा मते भल लागे मु मो घर कल्पना स्क्वायर रे सी रहे राजभवन छकठी मु जाए कोठी की सेठी चंद्रशेखरपुर मु एपटे जाई परंदी ना रसुलगढ़ देखि सेपटे जाई परंदी कि जयदेव विहार देखि जाई परंदी किंतु मु आगो जाए राजभवन छकठी मते भल लागे से घरटा भुवनेश्वर रे मते से घरटा भल लागे मो ड्रीम थाए जे मेघला गोटे घर करी मते से घरटा भल लागे मु जते बेले जाए से बरम 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा हाउ मु सेठी राउंड मारी कि जीवी बरम किंतु मु से घरटा देखि जाए जले से जगह को जाए दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सटर्नल मोटिवेशन because that is not even human okay so sometimes maximum times not sometimes even your external motivation is not human okay something some incident will compel you to do something okay then sometimes it will be an incident let's say आजी मु ऑफिस रे कोन गोटे काम कली भूल भाल काम हो गला मते बेइज्जत फील हैला मते इंसल्ट फील हैला तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आई विल बी कॉशियस दैट ए जिंसटा मो द्वारा जेमती रिपीट न हुए तो थ्रू आउट माय होल कैरियर मे बी मु एते कॉशियसली काम करी जिंसटा नेक्स्ट टाइम रिपीट न हो तो गोटे मिस्टेक मते मोटिवेट करेला not to repeat that mistake again गोटे इंसिडेंट से इंसिडेंट ता मिस्टेक नो से इंसिडेंट हला मो इंसल्ट फील हवाटा that is an incident which motivates you so sometimes maximum times not sometimes your motivation your soul motivation is not even human it's an incident it's a thing okay but these things these incidents for the first glance first time
ଲାଗିବନି ଏଗୁଡା ମୋଟିଭେସନ ବୋଲି, इट्स जस्ट एन इंसिडेंट. बट आफ्टर 1 year, आफ्टर 2 year, व्हेन यू कनेक्ट द डट, तुम पछकू फेरिक देखियो जानि परिबो अरे हां एगुडा मोटिवेशन थिला मो पई, एई छोट छोट जिंस पई मु एते काम कर देई गली. Whether at first glance they appear to be or not, these all are motivators, and most of them could be called positive motivators also, because they lead you, they compel you to do something. After all, they get us to pay the rent. ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, these emotions, these wantings lead us to do something. No, ଆମେ ମାନେ କିଛି ନା କିଛି କରୁଛେ पैसा इनकम କରିବା ପାଇଁ, नहले जदि किसी मोटिवेटर फैक्टर नथांदा, जदि किसी मोटिवेशन नथांदा लाइफ रे, तो गोटे मनुष्य कहीं काम करना, से तो जस्ट कौन करी खाली खाया पिया रोजगार कर दंदा जांदा. वी हैव सम इमोशंस. नो, स्त्री पिला अछंती, घर बापा बो अछंती, दे आर वांटिंग्स, दे आर ड्रीम्स. जतले हम भीतर सेडा एनगल्फ होई जे हम माने भाबु जे बहुत बड़ घर करबी, बहुत बड़ गाड़ी करबी. तो दोस थिंग्स, दोस आउटसाइड इमोशंस आर मोटिवेटर्स, and they are positive motivators also, because they lead us to do something. They compel us to think something, to do something. Okay, आम भीतर से एक्शन टा को क्रिएट करे ये जिंस गुडा. तो these are positive motivators. External motivators are generally positive motivators, but sometimes negative motivation also. Okay, we compel to do some bad things also. जे क्राइम करूची से कोट कोट तो मोटिवेशन पाइची ना, जे चोरी करूची ताको तो किसी गोटे इंसिडेंट मोटिवेट करूची ना एटा करिया पई. तो these are negative motivators. But if normal, maximum time normal life रे, whatever you do, you are doing due to some motivating factors. हमें जहाँ भी करूचे, चालुचे, खासुचे, बसुचे, जहाँ भी करूचे, हमें किसी नहीं जदि हमें जदि किसी मोटिवेट न करना माने दिन जाक हम खाली आइडल एमती आइडल हेकि बसंते, किछि करंते. Okay, so these are the external motivations. Means whatever you are doing for to income, मुझे जंती कही money is a small criteria to judge if a person is productive or not. तो जी भी money income करूची, से लोकड़ा किछि ना किछि गोटे external factor द्वारा motivate है कि अच्छी. So these motivations are external motivations. Okay, so motivation is nothing but a positive push. किछि गोटे की गोटे ताको push करूची, एटा कर. Okay, so all of us as motivators. आम समस्त लाइफ रे किसी ना किसी मोटिवेशन अच्छी, आम से नीड कहूचे. ओके, समटाइम्स मैं ड्रीम बोली कहूचे. नीड, ड्रीम इज डिफरेंट थिंग्स. नीड इज एक्सटर्नल मोटिवेशन, ड्रीम इज इंटरनल मोटिवेशन. ओके, नीड इज एक्सटर्नल, ड्रीम इज इंटरनल. वांटिंग्स आर योर एक्सटर्नल, नीड्स इज एक्सटर्नल, your necessities are your external motivations. But when it comes to your dream, your purpose of life, that is internal. Okay, purpose is something else. When your dream is non-negotiable dream, when your dream becomes non-negotiable, then it becomes purpose. Okay, purpose means what? नरेंद्र मोदी ता घर छाड़ी पळेला, हिमालय को पळेला, he has some purpose, no? तो जदि कोनसी लोक मु कहूनी से भल कर खराब कर, बट केते हेवी से जिनछटा ता माइंड रे हेगला, से घर छाड़ी पळेला. ओके, तो मनकर को लोक सेमती गोटे एक्टर अछि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, से केमिस्ट्री ग्रेजुएट, बड से ता घर छाड़ी पळे आसला गोटे से जो यूरी कोन सेटा पब्लिक टॉयलेट रे चाकरी गला. माने से केते खाली एनएसटी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रे टिके पढियो बोली, केते पागल. When your dream becomes purpose, you will get mad. तुमको पागल रो टैग दिया जिवो. Those are internal motivators, बस. Okay, but your needs, your daily wantings, your regular life necessities, these are external motivation. Okay, I will come to one by one. So all of us has a lot of motivating factors, has a lot of motivators. The question is, who is in control? एबे क्वेश्चन हला कोन, who is in control? Are you taking the responsibility for keeping yourself up or going, or are you letting the circumstances of daily living assume the responsibility for you? Means कोन हुए दी टाइप रो जिंस थाए, ता भितर थिन लाइन ड्रा करबाटा तो सहज न, फिर भी मु ट्राई करिवि. ओके,
very small things ମୁଁ କହିବି ଏତେ ସହଜ ନ ତାକୁ explain କରିବା because very ଧୁନ୍ଦଲା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା but फिर भी I will try। କଣ ହୁଏ ଦି ଟାଇପ ର ମୋଟିଭେସନ ଥାଏ। ମନେକର ଦିଟା ଲୋକ ମୁଁ ନଉଛି ଏକ୍ସ ୱାଇ। ଏକ୍ସ କଣ କରୁଛି ରେଗୁଲାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠୁଛି ତା ଚାକିରି କି ଯାଉଛି ଚାକିରିରୁ ଆସୁଛି ଚାକିରି କି ଯାଉଛି ମୋଟିଭେଟେଡ ବିକଜ ଭାଇ ମନ୍ଥ ଏଣ୍ଡରେ ସାଲାରୀ ମିଳିବ। 5ଟା ବେଳେ ଘରକୁ ଫେଳି ଆସୁଛି 10 ରୁ 5 ଡ୍ୟୁଟି 5ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରୁଛି 5ରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ମୋଟିଭେଟେଡ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ମିଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଟାଇମ ୱିଥ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋଟିଭେସନ ନ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ସମୟ ବିତଉଛି ଦେନ୍ ରାତି 9ଟା ରାତି 8:30 8ଟା 8:30 9ଟା ବେଳକୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛି ମୋଟିଭେଟେଡ ବାଇ ସିନେମା। ତାର ପାସ୍ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ଜିନିଷ ନା ମୋଟିଭେଟେଡ ବାଇ ସିନେମା। ପୁଣି 8ଟା ବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛି ପୁଣି 10ଟା ବେଳକୁ ଟିକେ ମଦ ପିଇ ଦଉଛି ମୋଟିଭେଟେଡ ବାଇ ଲିକର ବ୍ରାଣ୍ଡ। ପୁଣି ତାପରେ ଶୋଇ ପଡୁଛି ରାତିରେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପୁଣି ମୋଟିଭେଟେଡ ବାଇ ଡେଲି লিভিং ସକାଳୁ ଚାଲିଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ସନ ଇଜ ମୋଟିଭେଟେଡ externally motivated। ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ୱାଇ ଗୋଟେ ପର୍ସନ ସିଏ ସକାଳୁ ଉଠୁଛି ତାର କାମ ଦାମ କରୁଛି ଯାହା କରିବା କଥା ନିଜ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛି ଯେମିତି କରିବା କଥା 8ଟା ବେଳକୁ ଯାଉଛି 5ଟା ବେଳକୁ ଆସୁଛି ସିଏ କିନ୍ତୁ 5ଟା ବେଳକୁ ଘରକୁ ଆସୁନି ଷ୍ଟିଲ୍ ମୋଟିଭେଟେଡ ତାର ବି ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଅଛି ହେଲା ସିଏ ଏଠି ସେ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ମୋଟିଭେସନ ଟାକୁ ଦବେଇ ଦଉଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ମୋଟିଭେସନ ଅଛି ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ ଫର ମାଇ ଫ୍ୟୁଚର। ସେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛି କିଛି ଗୋଟେ ବିଜନେସ ବିଲ୍ଡ କରୁଛି ଓକେ ତାର ଏକ୍सଟର୍ନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯୋଉଟା ତାକୁ ଡ୍ରାଇଭ କରୁଛି ଘରକୁ ଆସିକି ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସିଏ କଣ କରୁଛି କମ୍ପେଲ କରୁ ତାକୁ ସିଏ ଦବେଇ ଦଉଛି ନାଇଁ I have some purpose in my life I have some dream in my life। ସେ ଯାଉଛି ବିଜନେସ ବିଲ୍ଡ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ନେଟୱାର୍କ ବିଲ୍ଡ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରୁଛି ରାତି 9ଟା ବେଳକୁ ଘରକୁ ଫେରୁଛି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଟିକେ ମଦ ପିଇବା ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବହି ପଢିକି ଶୋଉଛି ତାର କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନି ବହି ପଢିକି ଥୋଡ଼ି ନା ଦିନରେ ଖୁସି ମିଳିବ ଜାଣୁଛି ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବହି ପଢିବି 2 ବର୍ଷ ବହି ପଢିବି ଭିତରେ କିଛି ନା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ। ଡିଭିଡି ଦେଖୁଛି ଅଡିଓ ଶୁଣୁଛି ସେମିନାର ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି ସେଥିରେ ଶୋଉଛି ପୁଣି ସକାଳ ସକାଳ ଉଠିକି ଅଳସ ଭାଙ୍ଗିବା ଟାଇମରେ ସେ ଯାଇକି ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରୁଛି ଲେଖୁଛି ବସିକି ନିଜ ମିଶନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ ତାପରେ ପୁଣି ଯାଇକି ଶୋଇ ପଡୁଛି ପୁଣି ଅଫିସ ଯାଉଛି ପୁଣି ଆସୁଛି ତାମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ତା ଲାଇଫ ର କିଛି ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ ଅଛି ପର୍ପଜ ଅଛି ତ ଏକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱାଇ ବୋଥ ଆର ମୋଟିଭେଟେଡ ବଟ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଇ ଇଜ ଇଣ୍ଟରନାଲି ମୋଟିଭେଟେଡ। ୱାଇ ତାର ମୋଟିଭେସନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଟାକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବନି ବିକଜ ୱାଇ ଜାଣିଛି ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଏକ୍ସ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଏଭ୍ରି ଟାଇମ ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଦ୍ୱାରା ମୋଟିଭେଟେଡ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକ୍ 5ଟା ପରେ ଫ୍ୟାମିଲି ରାଇଟ ନାଓ ଆଇ ଏମ୍ ମୋଟିଭେଟେଡ ବାଇ ଫିଲ୍ମସ ସିନେମା ତ 8ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବି ନିଶ୍ଚୟ ରାଇଟ ନାଓ ଆଇ ଏମ୍ ମୋଟିଭେଟେଡ ବାଇ ଲିକର 10ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ମଦ ପିଇବି ନିଶ୍ଚୟ ତାମାନେ ଦିଜ ଆର୍ ଦ ଥିଙ୍ଗସ highly motivated by external factors both are all are positive motivations nothing is negative motivation here। ओके फैमिली साथ समय बिता थोड़ा ना खराब जी सब फैमिली साथ टाइम बिताउछि थोड़ा ना खराब लोग भल लोग ना ओके बट he will be throughout life this x सेता लाइफ टाକୁ केबे भी चेंज करि परिबन but y will be bigger y one day। okay so who is in control for a motivation? The situation that is motivating you that controls you or you are in or you are controlling the situation। okay so you are taking responsibility or the situation makes you responsible। I am taking my own responsibility so that's why I will do all the things which will be inconvenient for all the other people which will be inconvenient for all other persons surrounding me तांको भल न लागले एमिति कोन डिसिजन जो लाइफ रे but I know what I am doing। you are taking the responsibility by yourself or the situation will give you or compel you to take responsibility। जब निज आड़ निज रेस्पॉन्सिबिलिटी न नबो समाज तुमको रेस्पॉन्सिबिलिटी करे दबो जबरदस्त एते बर्डन तुमको दबो। ओके सो हु इज इन कंट्रोल? ओके so if this is a profound statement okay if you would like to be in control of the forces in your life which influence and affect everything you do then you most certainly would like to be in control of your own motivation।
again, if you would like if you would like to be in control of the forces in your life which influence and affect everything you do, then you most certainly would like to be in control of your own motivation. Okay, that means simply you should motivate yourself every day the best possible way. मनकर मु सकाळ उठुची, सकाळ 5:30 बेलू मो निदटा भांगिला, मु देखिदेली घंटा 5:30 हेची, मो पाखरे आहुरी गोटे घंटा टाइम अच्छी, यदि मु 6:30 बेलू मो काम दाम स्टार्ट करे इट विल बी ओके, नो प्रॉब्लम। 10टा बेलू मु घरे पहुंच जाई पारे, जाई स्कूल रे मु पहुंच जीवी, 10टा बेलू स्कूल रे पहुंच जीवी, 10टा बेलू ऑफिस रे पहुंच जीवी। लेट्स से दैट थिंकिंग इज इन माय हेड, क्लियर? ओके, यू विल अगेन स्लीप। 6:30 बेलू उठियो, आराम से ओली दोली भलो रोसे टिया करियो, खाई पी की, मींस परफेक्ट लाइफ रे तमे 9टा बेलू बाहरियो, 10टा बेलू ऑफिस रे पहुंच। दैट इज वन थिंग। But if you have something else in your mind, if you are building something else, if really you are serious about your future, you want to control your future, then 5:30 बेलू उठियो, बही पढियो, सेठी सुनियो, जे बिजनेस पई किछि प्लान करियो, सेमिति किछि अनऑर्थोडॉक्स जिंस गुडा करियो जोडा किछि बाहर लोक करनथि। मु कहि परिबिनी कार लाइफ रे कोन सेमिति अछि, बट जदि कि सतर किछि प्लान करछो, 8टा बेलू स्टार्ट करियो ऑफिस जिवा पई काम, जहाते कौन टी रोसे करी खाई देगी पळेर ऑफिस। ओके, दैट मीन्स द सेकंड पर्सन इज इंटरनली मोटिवेटेड, ही कंट्रोल्स हिज मोटिवेशन, ही इज अनसेकेबल। द फास्ट पर्सन इज एक्सटर्नली मोटिवेटेड। संडे रे फास्ट पर्सन 9टा बेलू उठियो, सेकंड पर्सन संडे रे भी 5:30 बेलू उठियो, संडे रे से बेसी काम करिवो सेकंड पर्सन टा, फास्ट पर्सन संडे रे दिन जाक खाली सोइबो। Okay, that is the only difference. Every Sunday मु बिजी रहूची, एठी एते बिजी मु रहूची बिकॉज़ 7 दिन या काम करि परनी। मुझे तो एटा काहू कहिबी जे 7 दिन या काम करि परनी, संडे रे काम करजी, बाहर लोक विश्वास करियनी कोन एमती करजू कि, से माने भाबुसन जे मु 7 दिन या काम करजी, बाकी 6 दिन या काम करजी, मींस ऑफिस स्कूल जाउची, बट मत लागुनी स्कूल जेवाडा मो काम बोली। मु संडे रे बिजी रहूची, इने आसी 9:15 बेलू घरे पहुंचली, सांग सांग गली गाधे ही आसिली, बट मु आज मु दिन रे गाधेनी, ता माने मु गाधे के आसी 5 मिनिट 10 मिनिट मोर लेट है। आई एम बिजी इन संडे ओनली। ओके, सो if you are motivated means you will control your all motivations. ओके, संडे माने नुह जे मु आरआरआर फिल्म देखि जीवी कि कोन सेटा कश्मीर फाइल्स देखि जीवी कि कोन से जहां भी फिल्म पडु, मु फिल्म देखिनी, वर्ष 1.5 वर्ष ला मु फिल्म किछ देखिनी, मु जानि बा फिल्म कोन आउ कि न। लोक को फोन करी स्टेटस दोसंती, फिल्म बढ़िया हला, से फिल्म बढ़िया हला। ओके, सो आई एम इंटरनली मोटिवेटेड, आई नो आई एम डूइंग समथिंग, तो न देखै पारे, बट आई एम डूइंग समथिंग। Clear? So the kind of motivation should be internal motivation. This is internal motivation. If we will do something means we are motivated. The external motivated people are ordinary people. They will live an ordinary life. Their work ethics, their work pattern, their routine is very predictable. हम प्रेडिक्ट कर दे परिबो, अरे ई लोकटा तो ये एइना आइठी थिबो, ये एइना बसी घरे थिबा फिल्म देखथिबो, ये एइना छकरे बसी खटी करथिबो। You can predict, but you cannot predict the internal motivated people. Okay, becomes unorthodox. Okay, so getting consistent, reliable, effective motivation. If you want your motivation to be effective, you will get confident from that, then be internally motivated. Internally motivated is not an easy job. Okay, मु आज गोटे दिन रे मु एग्जांपल इथमे दोची काहे ना मु हेडा करूची बोली मु फील मु कहनु मु सक्सेसफुल लोगडा, बट आई एम डूइंग समथिंग। मु आज दिन रे 3टा सीडी सुनी छु, 1.5 घंटा 3टा सीडी मु सुनी सकाळ उठ, बट मु जदी बाहर को जाके देखिबी लोक कान संडे रे कत कोन काम करछन, एन्जॉय करछन, मु 3 घंटा 3.5 घंटा खाली सीडी सुनियार बितेई जाय, बिकॉज़ लास्ट 4 दिन ला मु सीडी सुनी पर नथली। ओके,
मते सेटा को जिनटा को न्यूट्रल करिवार थिला आज दिन तक हम खाली ऑडियो सिटी सुनियार बितेछ क्लियर दैट इज ए टाइप ऑफ इंटरनल मोटिवेशन मु कहली खाया पिया बंद हो बरु आई एम हंग्री आई एम बाय माय माइंड मते माइंड फूड दब okay so your internal motivation will give you confidence it will justify your work your deed your whatever you are doing मु जहाँ भी करूची मो इंटरनल मोटिवेशन मत जस्टिफाई करे मींस मो इंटरनल यदि मो इंटरनली मोटिवेटेड मींस आई विल नॉट बी कंफ्यूज्ड सिंपली मु सकाळ उठले 8 कोन करिवि रे 10 कोन करिवि रे किछ काम नाही तो ता माने आई एम नॉट इंटरनली मोटिवेटेड इफ आई एम इंटरनली मोटिवेटेड मींस आई विल ऑर्गेनाइज ईच एंड एवरी ऑफ माय वर्क मते मीटिंग सरला परे मते पेपर चेक करियार अछि स्कूल रो मु फे पेपर से खाता देखले 11 11:30 हबो तापर मते गोटे वीडियो देखिबार अछि बही पढी सोइबार अछि मु जानि मारे केतल सोइबि पुन सकाळ 6 को उठियार अछि किंतु जदि मो पाखरे खाली पेपर चेक करियाटा थांता मु घंटा लागि पेपर चेक करियाउ सोइ पडिबि 8:30 को बट आई हैव अदर टू थिंग्स which will not give me any result tomorrow morning पेपर चेक करे रिजल्ट tomorrow morning मते मिल जियो मु पेपर नै सबमिट कर देबी किंतु से जो अलगा दीटा काम करबी बही पढिया वीडियो देखिबा डीवीडी देखिबा बिजनेस डीवीडी तारो रिजल्ट थोड़ा मॉर्निंग रे मिलियो मते मंडे मॉर्निंग रे मिलियो ना बट दैट इज an very necessary that is a very necessary thing for me because that is my routine okay so if you are internally motivated means you will be confident you will not be confused and your routine will be decided by you clear so it is the kind of motivation which does not require the aid of anyone else any assistance or support self motivation the motivation which comes from having a sense of purpose if you are having a sense of purpose then you will be self motivated again I am saying self motivation is the motivation which comes from having a sense of purpose self motivation is the motivation which comes from having a sense of purpose a sense of self esteem and self determination a sense of purpose a sense of self esteem and a sense of self determination these things will motivate you internally okay so this is all not this is all this is the first paragraph only these 2 pages only cover करछि एटा बहुत बड़ चैप्टर बट बहुत कंसंट्रेटेड हे कि देछि 8 10 पेज रे सार देछि बहुत जो डिस्क्राइब करे बहुत बड़ हो then next time something everyone needs next time I start करबी but for this one this much okay so